What is NMC? NMC is National Medical Commission, which came in force by the Parliament Act of 2019 of National Health Commission. So इसका main aim क्या होता है? This main aim is to provide quality as well as affordable education in the fields of medical and also make sure there are highly qualified professional in every country just for you. So ये NMC guidelines होती किन के लिए? This is basically for the students who are planning to pursue their medical career abroad outside India, but their future plan to come back to India and practice in India itself. So in today's video, we're going to talk about some recent updates that are just introduced in NMC guidelines. We're just going to talk about 4 or 5 new guidelines that are recently introduced in NMC. So let's get into that. So the first guideline is you should clear NEET exam. अब clear NEET exam से मतलब ये नहीं है that you need to score very high in the exam. It's not like that. Just need to score the basic passing marks. तो basic passing marks होते हैं around 150 and इसमें fluctuations होते रहते हैं but अभी तो 150 ही है and that is very basic and if you are pursuing this exam you can easily score this much. But if we talk about the public universities in India, they require around 600 marks, so that is something is very high, but you just need to have basic passing marks, then you can study in abroad for MBBS. So moving on the second guideline. The second guideline is 5 years plus 1 policy. अब ये 5 year plus 1 policy क्या है? इसमें ये होता है कि आपका जो भी कोर्स का ड्यूरेशन हो for MBBS, the minimum course duration of MBBS should be 4.5 years, which is 54 months. तो it's the minimum. अब वो आपका जितना भी ड्यूरेशन का कोर्स हो प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप अलग से होनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कंट्री बोल रही है कि वी प्रोवाइड 6 ईयर ऑफ कोर्स, तो उसमें 6 ईयर ऑफ कोर्स में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए, कोर्स अलग होना चाहिए, प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप शुड बी हेल्ड आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ कोर्स. तो हम अगर रशिया की ही बात कर लें तो रशिया में 6 इयर्स का कोर्स होता है, उसमें वो मेंशन करते हैं 6 इयर्स इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप, बट ये वर्क नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइन. दे हैव टू क्लियरली मेंशन द सेपरेशन ऑफ द कोर्स एज वेल एज द इंटर्नशिप, देन ओनली दिस कैन वर्क. So the next point is the country should give you a practicing license. What is a practicing license? It's a license that helps you to practice medicine in that particular country. तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इंटर्नशिप कर लेते हैं, then you have to give in certain exam in English language only. उसके बाद आपको आपका practicing license मिल जाता है. Then you can practice in medicine in that country freely. After that, if you plan to come back to India again, you have to give an exam called Next 1 and उसके बाद आप internship कर सकते हैं, then you can give exam Next 2 and after that either you can pursue post graduation and or continue practicing medicine in the India itself. So the next guideline is university should be English medium. अब इंग्लिश मीडियम से मेरा मतलब है कि ऑब्वियसली देयर विल बी मोर लैंग्वेजेस इन विच दे टीच मेडिसिन, बट दे शुड ऑल्सो टीच इन इंग्लिश ओनली. दे कैन बी बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाती हैं, तो यू शुड टेक केयर टू परस्यू द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको इंग्लिश में ही टीचिंग मिले, देन ओनली यू कैन कम बैक टू इंडिया एंड प्रैक्टिस. So the last guideline is students should not change their university once they have taken admission for the bachelor's course in MBBS abroad. तो आपने एक बार एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, अब दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस इट इज़ नॉट अलाउड. So yeah guys, that was all the information regarding new update in NMC guideline. If you have any other query, you can comment us down below and also call for a free counseling session today in these numbers given below. And don't forget to follow us on our Instagram channel. You can see the username somewhere here. So yeah, thank you for watching.